फिर से खेलना चाहते थे, पैर पर लगी, क्या गेंद स्टंप की ओर जा रही है यानी, और अंपायर ने साफ नकारा इस अपील को। और अंपायर का कहना है कि लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद जा रही थी, हालांकि उत्सुक नजर आ रहे थे इम्तियाज लेफ्टी और वो अभी भी वहां मौजूद हैं। अंपायर ने इस अपील को साफ नकारा। 11 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर जो फैसला किया यहां बैटिंग करने का, उन्होंने 168 बनाए, 169 रन चाहिए जीतने के लिए। 11 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। संजू खान, इस्माइल बहराज, मोहसिन मुश्ताक भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। 4 गेंदें हुई हैं, 11 रन टीम का स्कोर। अब निश्चित ही दबाव में नजर आएंगे वहां बल्लेबाज इमरान जरगर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और बैकफुट पर गए, धकेला गेंद को, उस दिशा में गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा। टीम का स्कोर अब 15 हो गया है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें हुई है इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए इम्तियाज लेफ्टी तैयार हो रहे हैं। शबनम मुजफ्फर आरमपुरा पटन से, जबकि अदीब मुजफ्फर लून, पीरजादा शकील अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। राही महराज बने हुए हैं कुंजर टंगमरग से। इम्तियाज लेफ्टी राउंड द स्टंप, सिरा लेती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर, वहां पे रमीज फील्ड कर रहे हैं। रमीज नारायण ने इस गेंद को फील्ड किया डॉट गेंद के साथ। पारी का ये पहला ओवर समाप्त हुआ। 15 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। केसीसी पुलवामा टॉस जीतकर जो फैसला किया था शाइनिंग स्टार पांपोर ने, उन्होंने 168 बनाए। 169 का जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए, उस लक्ष्य के जवाब में केसीसी पुलवामा का स्कोर अब तक अगर देखा जाए 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर समाप्त हुआ। नासिर वानी मैच का आनंद ले रहे हैं सईद तौसीफ के साथ। वानी उमर भी बने हुए हैं, जबकि साहिल फिरदौस भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आसिफ रमजान के लिए ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, जवन से बने हुए हैं साहिल फिरदौस। केसीसी पुलवामा 15 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं इमरान जरगर, जबकि समर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइनल लेग के दरमियान का जो इलाका है वहां खिलाड़ी तैनात है। स्टंप्स की लाइन में पैड लाइन पे गेंद थी, गेंद को धकेला हल्के हाथों के साथ, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन लेने का समय मिला 1 रन खाते में। नॉर्थ कोट ऋषि शाहिद, मुनीर खान भी बने हुए हैं गांधरबल से, जो मैच का आनंद ले रहे हैं। समर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। इमरान जरगर सामना करने के लिए तैयार, बैकफुट पर गए, स्ट्रोक तो जरूर लिया, ताकत नहीं लगा सके स्ट्रोक के पीछे। गेंद कवर की ओर गई, उस दिशा में खिलाड़ी तैनात मुजफ्फर वकार। टीम के खाते में किसी रन का इजाफा नहीं। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब तक 2 गेंदें हुई हैं। ओवर की तीसरी गेंद इमरान जरगर को फिर से बैकफुट पर गए, कवर के दरमियान से खेला गया ये करारा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। मिडिल स्टंप की सीध में गेंद ने टप्पा खाया, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी और ऐसे में बल्लेबाज को विथ मिली स्ट्रोक खेलने के लिए मौका हाथ से जाने नहीं दिया इमरान जरगर ने। इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब 20 हो गया है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। ओवर की चौथी गेंद करने के लिए गेंदबाज रमीज नारायण तैयार हो रहे हैं। सामने है इमरान जरगर, लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, निकाला गेंद को बॉलर के बगल से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बॉलर के बगल से खेला गया स्ट्रोक, गेंद दूर उस दिशा में बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 24 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। चौधरी मुंह, आदिल हसन, इशफाक भी मैच का आनंद ले रहे हैं। फिर से मिडिल स्टंप पर बैकफुट पर गए इमरान जरगर, ये स्ट्रोक जरूर लिया, कवर से दूर नहीं, स्कोर में भी किसी रन का इजाफा नहीं। 24 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सईद नासिर हुसैन, जबकि साहिल फिरदौस भी बने हुए हैं, इगास्टिक नडू के साथ खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, पैड के साथ रिकोशेट हुई, लेग स्टंप से बाहर पिच जो हुई थी और ऐसे में एलबीडब्ल्यू का कोई खतरा नहीं था। उत्साह में हाउस दैट की आवाज तो जरूर आई गेंदबाज और विकेट कीपर से। अंपायर ने साफ नकारा इस अपील को। डॉट गेंद के साथ तारीख का ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जाहिद को अब तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए, वो कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी करने जा रहे हैं। तीसरा ओवर पारी का और लगातार ये तीसरा परिवर्तन है। 9 रन खर्च किए हैं अपने
पहले ओवर में रमीज नारायण ने, जबकि 15 रनों का महंगा ओवर गया था इम्तियाज लेफ्टी का। अब जाहिद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिद सामने है समर, और समर अमीन के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की, वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं इमरान जरगर। ऑन साइड में फील्ड का जायजा लिया जाए, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी हैं, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, जबकि मिड ऑन थोड़ा सा वाइडिश जहां खिलाड़ी तैनात है। ऑफ साइड में देखा जाए मिड ऑफ है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के आसपास खिलाड़ी हैं, पॉइंट लगाया गया है। स्लिप कॉर्डन में खिलाड़ी हैं, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी। ये है ऑफ और ऑन साइड की फील्ड, स्क्वायर लेग है ऑन साइड में, लेग स्टंप छोड़ती हुई वाइड के साथ शुरुआत की है यहाँ जाहिद ने। टीम के खाते में 1 रन का इजाफा, टीम का स्कोर 24 से बढ़कर अब 25 हो गया है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मलिक जुल्फी, सज्जू देवा, मना नजीर मैच का आनंद ले रहे हैं। एगोस्टिक नडू भी बने हुए हैं, और उमरान मलिक और विराट कोहली आज मुकाबला जो होगा SRH और RCB का। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप की सीट में गेंद ने टप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल था, गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। एक गेंद हुई है इस ओवर की, अब तक 1 रन आया है इस ओवर में। 25 विकेट के नुकसान पर सकलन, मुश्ताक, रफीक तांत्रे, आकाश अर्शिद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार लेग स्टंप पर पैड लाइन के साथ गेंद जाके टकराई, विकेट कीपर ने गेंद को अपने दस्तानों में लिया। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट, सिंहपुरा, आर्को फेनेस्ट्रेशंस, UPVC विंडोज एंड डोर्स, जिनके सहयोग से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। समर सामना करने की तैयारी में, समर का स्कोर 1-3 गेंदों का सामना किया, वो सामना करेंगे जाहिद का। जाहिद इस ओवर में अगली बार, इस बार बल्ला चलाया समर ने, गेंद कुछ हवाई रास्ते और कुछ जमीनी रास्ते, बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। पलटकर ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, ऑफ स्टंप से काफी दूर थी ये गेंद, और ऑफ साइड में एक दीवार खड़ा किया गया है। इस कदर फील्ड सजाई गई है कि परिंदा पर भी मार ना सके, और ऑन साइड में ये स्ट्रोक लिया, ये देखते हुए कि ऑन साइड में ज्यादा फील्ड तो नहीं है, प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं है, वहां दायरे से बाहर गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर ओवर की अगली गेंद, गेंद फिर से हवा में दूर उस और मिड विकेट क्षेत्र, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। समर के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा छक्का, हालांकि पहला छक्का था और इससे पहले उन्होंने एक चौका जड़ा। इस छक्के की सहायता से 35 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पे है, अब उस दिशा में लॉन्ग ऑन की ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, स्क्वायर लेग लगाया गया है, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर है। जाहिद इस ओवर में अगली बार तेज कदमों के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, तेज गेंद थी, और गिरने के बाद कुछ रुक कर आई, शरीर के साथ जाके टकराई। शरीर को वो गेंद की लाइन से जुदा करना चाहते थे, पर गेंद ने टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई, कांटा बदला, और स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। कुल मिलाकर 5 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। आखिरी गेंद करने के लिए जाहिद तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में आखिरी बार 35 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जाहिर इस ओवर में आखिरी बार, इस बार गेंद पैड पर लगी, जबरदस्त अपील, और गेंद में एक अच्छा खासा उछाल था, विकेट कीपर को चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अंपायर ने इस अपील को साफ नकारा, और ऐसे में बल्लेबाज मैं कहूं किस्मत के सहारे ही सही अभी भी नाबाद हैं। 35 से बढ़कर 39 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त हुआ, और समर का जो स्कोर है 11 है, जबकि इमरान जरगर का स्कोर 22 रन। 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। 39 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। रमीज नारायण वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। इरशाद भाई, आपके साथ मैं एक वाक़ा शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। रमीज नारायण वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने की तैयारी करेंगे। डैरल हार्पर का एक वाक़ा मुझे याद आ रहा है, जब भारत न्यूजीलैंड दौरे पे गया था, तब वो वहाँ अंपायर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, और तेंदुलकर के हेलमेट पर गेंद लगी थी और उन्हें LBW करार दिया गया था। जब वो भारत आए थे तो बार बार यही प्रश्न उनसे पूछते थे भारत के निवासी, भारत के रहने वाले, क्या आप वही ऑफिशियल हैं जिसने तेंदुलकर को तब आउट दिया था कि जब गेंद हेलमेट पर लगी थी।
डैरिल हार्पर हालांकि वो परेशान हुए थे, बार बार वो किसको क्या जवाब देते, उनका जवाब एक ही था, स्टंप्स की लाइन में थी, गेंद हेलमेट के साथ लगे या शरीर के साथ, मैंने उसको तभी आउट दिया है। और रमीज नारायण ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर अंदर की ओर आई, सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर को चकमा देती हुई दूर ओस और गई। शॉर्ट स्क्वायर लेग से खिलाड़ी चलते बने, स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने भी वो शोर दौड़ लगाई जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से 39 से बढ़कर 40 हुआ टीम का स्कोर, ये इस पारी का चौथा ओवर प्रगति पे। This is the 4th over of the innings, 40 for 1. This is an interesting move to introduce spin and particularly leg spin. Comes down the wicket and that has gone the journey. That is a smack. Couple of steps and then a helicopter over long on for a 6. Summer is on fire here. 46 for none. Would you believe that? This is the 4th over. 123 needed from 99 now. KCC Pulwama, they are in hot pursuit of this chase here at Koil Pulwama in the final of Koil Premier League. No answer so far for these two bowlers, but that LBW shout, yeah, definitely that was close, but umpire has the final say when you're appealing. Umpire negated that appeal as he had in the first innings when Asif Rasool and company were bowling. Summer this time goes through for one more. That single takes the total to 47. Imran Zargar is batting on 23 from 13. Summer is batting on 18 from 9. Both of the batsmen have decided enough is enough. They're going after the bowling. They're going to utilize the power play restrictions. Once again, a good delivery. Proper respect and given a single. One more run takes the total to 48 for none. 3.4 overs have been bowled so far. 3.5 overs have been bowled so far. JK Sports Time providing you live coverage. One of my friends, Musaddiq Bashir, has joined me. Thank you very much, 180 Star Mobile, Mushtaq Akbar, Wasim Chaudhry, down the wicket, no fielder, that's gonna go for 4 more. Asking for trouble and dispatch to the boundary. 50 comes up. From 4 overs for KCC Pulwama, and boy, what a start this has been, fiery to say the least. Summer is batting on 22, Imran Zargar is batting on 24. JK Sports Time providing you live coverage from Koil Pulwama in the final of Koil Premier League, and we are having our sponsors who are doing every bit to provide live coverage, help us providing live coverage to our viewers back home. We have Anthem Sports India, Arco Fenestration, UPVC Windows and Doors, Fashion Fiesta, Shining Star Pampore. They're our proud sponsors and they're helping us every bit. Change in bowling. The skipper of Shining Star Pampore has been prompted to bring a change. And here comes Nazir Tiger to bowl spin. Off spin. Had a mid-wicket in place, but the batsman on that occasion, Imran Zargar, was not able to hit it with proper timing, and you can understand the frustration from Shining Star Pampore came. This is the 4th change, and this is only the 5th over of the innings. KCC Pulwama, they're just marching along. Slip in place for the off spinner. Summer gives it proper respect, goes up the back foot, plays it away onto the offside for no runs. 52 without loss. Mir Ashik, Rani Adnan, Musa Bara and Bat Farzan have joined us. Slip in place, deep mid wicket on the boundary, long on the boundary. Next ball, waits for the ball and then just
flicks it round the corner, goes through for one more. This is intelligent batting from Summer, and with him is Imran Zargar, giving him ample company. Imran is batting on 24 now. He's on strike. This ball pushed through the air, pushed a bit quicker, and Imran Zargar is up to the task. Plays it back to the bowler for no runs. We are in the 5th over. Here is the next ball from Imran. That's a beautiful delivery. Beg your pardon, Imran Zargar from Nazir Tiger. That one beating him comprehensively there. 54 for none. The last ball of the 5th over coming up. Once again, that is just a bail clipper. Oh, how did that miss the leg stump? End of a good over ball by Nazir Tiger after being hit for a boundary. I beg your pardon, no boundaries coming off that over. 5 overs gone. It's 54 for the loss of no wicket. And this is an electrifying start, top of the order from Summer and Imran Zargar. Shabir Ahmed has joined us. Thank you very much. Thank you everyone among our viewers on JK Sports Time. We're pretty much thankful to you people. We're just adding flavor and spice to this broadcast of JK Sports Time. Mushtaq Akbar and Jannat, thank you very much. And our viewers might be itching for that prestigious tournament in North Kashmir, Panditpura Premier League, beg your pardon. Panditpura Premier League is to be kick-started in a matter of days. One of the tournaments to watch out for. Fahim Wani has joined us. Shabir Ahmed, thank you very much once more. Saim Sajjad and Muddi Mudassir. Another bowling change. The 5th one. In the 6th over, would you believe that? Muzzi Wakar has been brought on. He's the skipper of Shining Star Pampore. He's a man at short fine leg, deep mid wicket, long on. Another good delivery. Off spin, and they're desperate for a wicket here. 54 for none. This is the 6th over of the innings. Saeed Shakir and Shahnawaz. This is bashed down the ground. There is a man. Does well. A tumbling staff nonetheless. Nazir Tiger limits the scoring to just a single and takes the total to 55. That single. Imran is batting on 25. He's now on strike. Summer is on 24. This is just funny stuff from the bowler. He was trying to rip this one. He's trying to bowl a leg spinner. It's often the case. I saw some bowler slipping the ball from his hands in a recently held match at IPL as well. Shabir Ahmed, Tariq Ahmed, thank you very much. Nisar Ahmed, the next ball, waits for the ball and then cuts it, finds the fielder. 114 needed from 86. This is the start they needed. Start they might have dreamt of. Here is Muzzi Wakar, pushes it through. Somehow manages to hit it back to the bowler as that ball had kept very low. 55 for none. Now the last ball of the 6th over coming up. Hitting the match of IPL between SRH and Royal Challengers Bangalore. But Virat Kohli has been dismissed for a first ball golden duck by Jagadishan Suchit, the off spinner. You might watch Umran Malik in action because Royal Challengers Bangalore, they are batting first. Adil Khan, Farooq Rani, 55 for 1. Power play done and dusted. Shining Star Pampore need a wicket here, and how desperately they need it. Munawar Hassan has joined us in the meantime. So has Farooq Rani and Saeed Shakir. 55 for none. Imran batting on 25 from 21. Summer is batting on 24 from 15. These two batsmen, they decided that they're going to come after the bowlers. They're going to go after the bowling, and right from ball one they have been apt. They have been right on the money.
.55 without loss. Lots of chat going on between the players of Shining Star Pampore because they need a wicket here and they need it desperately at the moment. Otherwise these two players are gonna run away with the show. .55 without loss from 6. Bowling change? No. It's going to be Nazir Tiger to continue from the media centre end. JK Sports Time providing you live coverage in collaboration with our sponsors Anthem Sports India, Arco Fenestration, UPC, UPVC Windows and Doors, Shining Star Pampore and Fashion Festa. Here is Nazir Tiger. That's played nicely. Dropped in front and hurried across for a single. That's good batting. That is sensible stuff from the two batsmen out there in the middle. Irshad Lone has joined us. Mushtaq Akbar and Mir Mukhtar. 57 for the loss of no wicket. Chasing 165, I think. 169, beg your pardon. This one has been swept in front of square. Man back at the deep mid-wicket boundary. Will stop that and restrict the scoring to just a single. That single takes the total to 58. KCC Pulwama. They're chasing 169 from their allotted 20 overs. Wicketkeeper is up to the stumps. Down the wicket and easy stumping. That is a soft dismissal. The batsman running down the wicket had no intentions of hitting the ball out of the ground though. Was trying to play a forward defensive push. Intelligently bowled by Nazir Tiger. Slipping it past the pads. Wicketkeeper had all the time in the world to clip the bails off. And off goes Summer after scoring a brilliant 27. The first blood has finally been drawn. It's 57 for 1. Nazir Tiger strikes for Shining Star Pampore. Rahi Qayyum has joined us. Mirza Abid Beg, Pareb Fayaz, Shahid Wani. KCC Pulwama in hot pursuit of that chase. 169. Jia has joined us. Behind the stumps, it is Asif Ramzan. Kumar Sangakkara is there with Rajasthan Royals. Is coaching them for IPL. He's no longer here. Zuhur Khan, Rathar Hamid, Mir Ashik, thank you very much for joining JK Sports Time and watching live broadcast. Nazir Tiger is bowling with a field slipping place now for the new batter. Adil is the new batsman in. Short fine leg, deep mid wicket, long on. It's a good delivery. Gripping the surface, coming in. A typical off spinner from Nazir Tiger. He's bowling good here. He's bowling good lines and good lengths. And he's bowling nicely to keep the batsman in check. Deep square leg, deep mid wicket, long on, plenty of protection on that onside. This is lofted inside out. Has that gone to the fielder? No! It has cleared the field and that's gone for 6. Outstanding shot from Akib there. Saw Nazir Tiger over pitching. Played it inside out, lofted hit. Clearing the fielder. Imtiaz lefty with mighty ease. That's gone for 6 more. That 6 takes the total to 63 for 1. And every batsman so far on the 4 has looked to be in a hurry to chase 169 down here. Shining Star Pampore looking under the pump. They need wickets and they need them quickly. Asif Rasool yet to come. And he's going to be the main threat for Shining Star Pampore. Is that man there, Asif Rasool. He knows how to chase such a totals down. And he knows how to hit
big ones and how to construct an innings. Ashraf Haidari has joined us. Wani Bilal. Walaikum Assalam everyone. Leader Whitey, Shano and Rathar Hamid. Here is Nazir Tiger. This time outside the off stump, taking the ball away from the right-hander. It's a dot ball. 106 needed from 79. The asking run rate is 8.15. The current run rate is 9 runs. Slip in place. The last ball. Waits for the ball to turn, then cuts it away. Sweeper back on the boundary. Will do the business of fielding the ball. Overcomes to a completion. 7 done. Scoring at a run rate of 9 runs and over. They're 64 for the loss of 1 wicket. The batsman dismissed was Summer. Was unfortunately stumped on the softest of the dismissals. 64 for 1. Imtiaz Imran Zargar is batting on 26. I think he has some problems with the ball. He's checking it time and again. And the reason why he's checking the ball is that since the ball was lofted over long off and the ball hasn't come back ever since, and that's why the new ball which has been introduced, that's cut away nicely, finds the fielder, does well, limits the scoring to just a single, and Imran Zargar wasn't happy with that ball and that's why he's asking for a change of ball, but umpire says him to continue. 1 more run takes the total to 65 for 1. Here is the next ball from Muzivakar. That ball gripped in the surface once again as he was through the shot early. Fortunately for him, there wasn't a short mid-wicket or a short mid-on. The man at the boundary, back on the boundary at long on. This is pulled in front of square. Plenty of protection and long boundaries. Means there will be only a single. That single takes the total to 67. Rathar Hamid has joined us. I myself am Irshad Ahmed. And with me is Nasir Bhai, your Hindi commentator. This one has been lapped round the corner. No man there. That will run away to the boundary for 4. Skillful and mighty effective. Outstanding stuff from Imran Zargar. Gets another boundary to his kitty. Moves to 31. And KCC Pulwama are going along nicely. 71 for 1. This is the 8th over of their innings. Current run rate is 9.26. But Manzoor has joined us with a question. Come back to you after this delivery. This one has been pulled away round the corner in front of square down towards deep mid-wicket for 1 more. That single takes the total to 72. This is good batting. This is sensible batting from Imran Zargar. Getting a boundary and then immediately turning it on, getting 1 more and getting his partner back on strike. Outstanding batting. Will they push harder for a couple? No, they won't. They're satisfied with just a single to finish that over. 8 gone. It's 73 for 1. Well, but Manzoor's question, what do you think about Virat Kohli? Will he bounce back or not? We can't predict anything in cricket, that's for sure. But talking about Virat Kohli, he's one of those big guns of the world cricket. Surely was in some form, but today he has been dismissed by the off spinner once again. Off spin has been his weakness time and again, and now in this match too. He was dismissed on the very first ball, and SRH have been very brilliant in matchups. They knew Virat Kohli will come top of the order. He will face the first ball, and Williamson threw the ball to Jay Suchit. And Jagadisan Suchit was the man to dismiss Virat Kohli for a golden duck on the very first ball. 73 for 1. 8 overs bowled. KCC Pulwama in pursuit of 169. They're 96 runs away from 72. They have 9 wickets in hand.
and the two men out in the middle are doing an outstanding job. They're getting the boundaries at will. They are rotating the strike and taking the scoreboard over. Slight hold up in the play. Understandably so, because the ball that was in the field of play, the two batsmen weren't happy with that, and that's why it has been changed now. Mir Ashik, Amir Dar, Pir Umar. Pir Umar is watching and he's waiting for Umran Malik to breach that mark of 100 miles per hour, 160 kilometers. Meanwhile, Sunrisers Hyderabad have moved up to 30 for 1 in the 5th over. Du Plessis batting on 9, and one of the revelations. Timeout has been signalled, so it will be a break for the players to get a rehydration break till the ball is retrieved back. JK Sports Time providing you live coverage in collaboration with our sponsors. We have Arco Fenestration, UPVC Windows and Doors, Anthem Sports India, Fashion Festa, Nasir Sports Mart and Shining Star Pampore. Arco Fenestration, UPVC Windows and Doors has joined us in that list of our proud sponsors, and we are quite thankful for them that they had time and again provided us the leverage and the privilege of having this live broadcast in these matches and helping our viewers from the comforts of their homes to watch live cricket and watch their stars in front of them on their mobile screens. Dar Shokat has joined us, Mir Shakir Dar, Rishi Shahid, Ilyas Wani, KCC Pulwama. They're chasing 169. And Nasir Bhai has joined me. Nasir Bhai, talking about this chase, 169 was never going to be easy, that much easy, but these two batters out in the middle, Samar and Imran Zargar, they came out to open the batting, but they were not able to get off the hook right from ball one. They were in some sort of a hesitation right from ball one, and they were not able to score freely, neither were they able to just take the scoreboard over, and that's why they managed only 168 in their allotted 20 overs. Qureshi Reis has joined us in the meanwhile. So has Dawood Pir and Noor Mohammad Sheikh. बिल्कुल सही कहा आपने, जो मैंने इनिंग की शुरुआत में भी कहा, कुछ डिफेंसिव अप्रोच ज़्यादा अपना लिया था शाइनिंग स्टार के बल्लेबाजों ने, और उन्होंने पहले जो 10 ओवर हुए थे पहली पारी में खुलकर स्ट्रोक नहीं लगाए, रन औसत ज़्यादा नहीं थी, और ऐसे में वो जो उन्होंने लक्ष्य खड़ा किया 169 रनों का, कोई छोटा लक्ष्य नहीं था, उस लक्ष्य को डिफेंड करने की वो कोशिश करेंगे। अभी भी 96 रन चाहिए जीतने के लिए, 72 गेंदें बची हुई हैं, 73 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत मिली यहाँ केसीसी पुलवामा को, और आदिल ने अब तक 10 रन बनाए और इमरान जरगर ने कुल मिलाकर 32 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया। खेल अब फिर से शुरू होने जा रहा है। 73 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। कुछ नबी तुली गेंदबाजी गेंदबाजों के दौरा, और उसका फायदा लिया बल्लेबाजों ने। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए। आदिल का स्कोर 10, इमरान जरगर 32 रन बनाकर नाबाद, जो एक सफलता अब तक अर्जित की गई है। इकलौता झटका जो लगा केसीसी पुलवामा को समर के रूप में, समर मैदान छोड़कर वापस गए। पहले और इकलौते बल्लेबाज अब तक के रहे। 73 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। वहां खेल फिर से शुरू होने को है। क्रिकेट का जो जज्बा है वो हर किसी के रग रग में है, और कौन कहता है मैं क्रिकेट से मुतासिर नहीं होता हूँ। और आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक छोटा बच्चा, वो जो वक्फा था वो मैदान में आ गया और बल्ला हाथ में लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डल स्कूप किस तरह खेला जाता है।
और ऐसे में वो कुछ वहाँ दृश्य जो दिखा रहे हैं वो देखने के लायक। अब वहाँ हम पर पूछे उन वो जो छोटे बच्चे मैदान में आए थे उन्हें अब बाहर कर दिया गया। एक नई रणनीति अपनाने के लिए जा रहे हैं टीम के कप्तान ने, ये देखकर कि सट बल्लेबाज इमरान जरगर क्रीज पे हैं और उनका साथ दे रहे हैं आदिल। टीम का स्कोर 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और देखा जाए इमरान जरगर स्ट्राइक पे रहेंगे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं आदिल। इमरान जरगर का निजी स्कोर देखा जाए 32 रन और उन्होंने कुल मिलाकर 25 गेंदों का सामना किया। इमरान जरगर स्ट्राइक पे और आदिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। 73 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। रमीज नारायण नया ओवर शुरू होने को है और नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले ओवर में उन्होंने कुछ रन तो जरूर खर्च किए हैं। इस ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद ऑन साइड में डिफ्लेक्ट किया इस गेंद को 1 रन के लिए। इस 1 रन की सहायता से इमरान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंच गए हैं। 72 से बढ़कर 73 अब टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। रमीज नारायण ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। मिडिल स्टंप की सीध में गेंद पिच हुई और उस दिशा में स्ट्रोक लिया गया जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की सहायता से रमीज नारायण जो अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं बल्लेबाज इमरान जरगर। सामने है अब आदिल। आदिल सामना करने के लिए तैयार। बल्ला चलाया, कवर की ओर गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात मुजफ्फर बेकार। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। बट मंजूर इस प्यार के लिए शुक्रिया। ऋषि शाहिद भी बने हुए हैं और आदिल 50 ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है आज। इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में चली गई, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं पर वो गेंद से दूर रहे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और ये स्ट्रोक खेलने के लिए ताकत तो ज्यादा नहीं लगाई। काफी समय तक गेंद हवा में रही। जाहिद जो पॉइंट पे फील्ड कर रहे थे उन्होंने काफी रास्ता तय किया कवर तक पहुंचने के लिए पर वो गेंद को फील्ड नहीं कर सके। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 83 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। केसीसी पुलवामा 83 रन 1 झटका लगा। टाइगर्स इशफाक, ऋषि शाहिद, बट मंजूर भी मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग के बिना ये सब कुछ तो नामुमकिन है। और ऐसे में आप जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। अपना प्यार दोगुना करने के लिए आप जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए स्टार्स भेज सकते हो। रमीज राजा दाएं हाथ के गेंदबाज। मिडिल स्टंप की सीध में गेंद ने टपा खाया, सीधी रहती हुई गेंद वापस धकेला। फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई। डॉट गेंद के साथ पारी का ये 9वां ओवर समाप्त हुआ। 83 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर बचे हुए हैं, जीतने के लिए 86 रन चाहिए। 86 needed from 66 now. The asking run rate is just 7.82. It's well below that current run rate, which is 9.22. Well, we have got some sponsors who are helping us in this cause, providing live coverage to our valuable viewers from the comforts of their homes. We've got Arco Fenestration, UPVC windows and doors, Anthem Sports India, Shining Star Pampore, Fashion Fiesta and Nasir Sports Smart. Arco Fenestration, UPVC windows and doors. They are the new in that pile of the list. That's a good delivery. Almost spawned it back to the bowler on that occasion. That is outstanding bowling from Nazir Tiger. Almost carried back. One bounce fell in front of Nazir Tiger and eludes him, and the batsmen go through for one more. 84 for 1 as the next ball from Nazir Tiger. This is pushed through, beautifully bowled. It's past that outside edge, and how often hasn't he missed that? Hasn't he hit that outside edge of the bat? That delivery, Nazir Tiger might have got 3 wickets so far.
But cricket, well, you might have luck on your side too. That's pulled in front of square. Has he got it in the gap? Will the batsman push harder for a second? Yes, they do. The fumble allows the batsman to come back for 2 more, and those couple of runs have moved Imran Zargar to 36. Adil is batting on 20. He's at the non-striker's end. Next ball. Tries to bowl a leg spinner that has been belted down the ground. Once again a tumbling stop by the fielder coming from long on. Moving to his right towards that cow corner region. The batsmen go through for 2 more. 38 not out. Imran Zargar comes down the wicket. Hoiks it in the air. Down towards deep mid wicket. The fielder once again does well. That's good fielding. But how brilliantly is Imran Zargar batting? Is dropping that ball in the gaps and picking up easy couples and singles apart from those boundaries. Halfway stage, KCC Pulwama, they're cruising along. They're 91 for 1. They now need 78 runs from 60 balls. The chase is definitely on. Shining Star Pampore need wickets in a heap here. Imran Zargar is batting on 40. He's almost running away with the show. KCC Pulwama, they were set a target of 169. They are persisting with Nazir Tiger and Ramiz. Ramiz is bowling his leg spinners. Long on is on the boundary, long off, deep mid wicket, deep square leg on the onside. On the offside, cover is sweeping on the boundary, and there is a wideish long off station. 90 for the loss of 1 at halfway stage. Here is Ramiz. This is lofted back over the bowler's head. Watch out in the crowd. That's gone for 6. Outstanding hit in the slot and dispatched. First ball 6. Ramiz is under some serious bump here. The man in hot form is Akib. He's smashing them at will. Moves to 26 now. Next ball. This is sensible batting. Comes down the wicket. Soft hands, pushes it away down towards the vacant mid-wicket region and sets off for 1 more. How brilliantly has this duo batted so far? 95 for 1. 74 needed from 58. Brings the man who's batting on 44 on strike. Down the wicket. This is swept and swept beautifully. But there is protection. He cannot do anything with that as well. That's gone for 4 more. Imran Zargar is enjoying this. Tossed up on the leg stump, shimming down the wicket, and Slog swept it beautifully down to the square leg boundary. How good a shot was that? Takes himself to 44, and KCC Pulwama, they're 99 for 1 now. They're approaching the 100. They need 70 from 57. Current run rate is 9.43. The asking rate is just 7.37. Ramiz waits for the ball. Cuts well. There is protection in the deep. Limits the scoring to just a single. 100 comes up for KCC Pulwama in the 11th over. केवल एक झटका लगा. एक अच्छी शुरुआत मिली यहाँ केसीसी पुलवामा को. रमीज इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप्स को गेंदबाजी कर रहे हैं. लेग स्टंप से बाहर पिच होने के बाद गेंद ऑफ स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी. सिरा लेती हुई स्लिप कॉर्नर में हल्का सा मिसफील्ड हुआ एजाज से. रन तो केवल 1 मिलेगा. इससे 1 रन की सहायता से इमरान जरगर अब स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे. एजाज हुसैन शेख शाकिर मैच का आनंद ले रहे हैं और केसीसी पुलवामा, उन्हें जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, केवल 169 रन चाहिए जीतने के लिए. रमीज इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार. लेग स्टंप से बाहर पिच होती हुई गेंद अंदर की ओर आई. मिड विकेट की दिशा में
लिया गया स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से पारी का ये 11वां ओवर समाप्त हुआ 102 1 विकेट के नुकसान पर। 67 रन 54 गेंदें बची हुई हैं। पिंजूरा टंगमरग से डार इम्तियाज, मसूदी राशिद, जबकि गौहर अमान भी मैच का आनंद ले रहे हैं। सलाम भेज रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए गौहर अमान। 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और यहाँ मैं जिक्र करूँ कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं है चेज करने के लिए, और ऐसे में ये जो एक रणनीति अपनाई है यहाँ बल्लेबाजों ने, मैं केसीसी पुलवामा की बात कर रहा हूँ। इमरान जरगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए, मैदान के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक लगाए। शुरू से अब तक गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे हैं, हर एक गेंदबाज को यहाँ आजमाया गया, इस्तेमाल किया गया। अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज एजाज कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी करेंगे। उमर उम्मी मैच का आनंद ले रहे हैं, ऋषि मंजूर के साथ रियाज बॉटनी बने हुए हैं, हारून तनवीर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं आरको फेनेस्ट्रेशन, यूपीवीसीज विंडोज एंड डोर्स, अंथम स्पोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पांपोर, फैशन फीस्टा, नासर स्पोर्ट्स स्मार्ट सिंहपुरा। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद डिफ्लेक्ट किया सुकर लेग की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर मोहसिन रमजान की ओर। हालांकि आसिफ रमजान की ओर उन्होंने गेंद को अपने दस्तानों में लिया। स्कोर में 1 रन का इजाफा, इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर अब 103 हो गया है। 11.1 ओवर की गेंदबाजी। इमरान जरगर ने क्या आतशी पारी खेली, 45 रन बनाकर वो नाबाद हैं, जबकि आदिल 27 के स्कोर पे नाबाद हैं। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक लिया, बॉलर के बगल से गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, उस ओर खिलाड़ी पहुंचे नजीर टाइगर। शानदार फील्ड खिलाड़ी के द्वारा, वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां जरूर बजाई, स्वागत किया इस शानदार फील्ड का। इससे पहले बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 2 रनों की सहायता से 105 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन चाहिए जीतने के लिए। 52 गेंदें बची हुई हैं। इस बार फिर से ऑन साइड में डिफ्लेक्ट किया इस गेंद को, रन तो केवल 1 मिलेगा। इस 1 रन की सहायता से 106 केसीसी पुलवामा। 11.3 ओवर की गेंदबाजी। रशीद शाहिद, शाही फिरदौस, शबीर लालवानी भी मैच का आनंद ले रहे हैं पांपोर से। यहाँ 63 रन चाहिए जीतने के लिए। 51 गेंदें बची हुई हैं। डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट लगाई गई है, जबकि लॉन्ग ऑन भी फील्डर तैनात। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद के पिच तक पहुंचे इमरान जरगर, गेंद दूर उस दिशा में, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन इस छक्के के साथ अर्धशतक पूरा हुआ बल्लेबाज इमरान जरगर का। क्या शानदार स्ट्रोक प्ले देखने को मिला, बिल्कुल दिल जीतने के लिए ये स्ट्रोक तो काफी था। Absolutely a treat to watch, coming down the wicket, the pitch of the ball and smacking it out of the middle. That's gone a long way. Big boundaries towards that cow corner, but that has just cleared the boundary with mighty ease. That 6 takes the total to 112. This is the 12th over of the innings. Now they are 57 short, and Imran Zargar is batting on 54 from 37. He has announced himself, and he has announced himself big time in a big match. Final of Koil Premier League here at Koil Pulwama. Ejaz this time is trying to lap it round the corner, getting carried away, getting too complacent, too cute. Fortunate for him, didn't get a tickle. I remember Joss the boss, Joss Butler, when he was just enjoying the bowling in the last match. He was enjoying the bowling and he was hitting boundaries at will. The final ball of the over, he was trying to go over the wicket keeper's head, managing to hit it straight to the fielder inside the short third, and he was dismissed on a similar kind of a stroke. Over comes to a conclusion after the completion of 12. It's 112 for 1. Sajid Gulzar, Raiswani, Egostic Nadu, and Gauhar Rahman sir has joined us. Talking about Gauhar sir, he's one of those personalities of this part of the world who is doing a fabulous job of helping the students, helping the wards learn the magical language of English.
You're the pride of the valley, Gauhar Amansa. Thank you very much for joining us. Masoodi Rashid, Shakir and Umran Malik once again has been expensive. In his first over, he's gone for 20. 112 for 1 from 12. It's a bowling change. And Zahid has been brought on. Prior to this, he has bowled 1 over in which he gave away 11 runs. On strike is Aqib. First ball, this one has been hit away down towards deep mid wicket in the gap. The fielder does well. A tumbling stop, but the batsman will come back for a brace. Two more runs have taken the total to 114. Rajat Patidar is batting on cloud 9. He's batting on 42 from 28 against Sunrisers Hyderabad. And Umran Malik once again going the journey in his first over. 20 of that first over. Your pace, well, sometimes the pacey you bowl, the faster it comes from the bat and disappears. But he's still young and he will go for pace once more. Sometimes he's mighty effective. He got 5 wickets in one of the matches. This one has been bashed down the ground in the gap. That's gone for 4. There was a fielder there, Nazir Tiger, but he was a mute spectator, and that was hit so hard, and the timing was beautifully done on that occasion. Superb stroke for 4. 118 for 1. Aqib is batting on 30. This time he smashes it straight to the fielder. Imtiaz lefty is fielding at wide mid-off. On the boundary, the batsmen go through for 1 more. 119 for 1. Now they are 50 short of a well-deserved victory in the finals and be the champions. KCC Pulwama. Down the wicket. Hits it straight into the hands of the fielder, who does well. Jumps in time and stops this ball from going to the boundary. Limits the scoring to just a single. But Imran Zargar and Aqib, well, they are just doing it with utmost ease. 120. The 5th ball. Outside the off stump. A rare shot. A rare dot delivery, beg your pardon. You can just understand the gravity of the matter at this stage. These two batsmen are taking a heavy liking of the two bowlers. This time shuffling too much across the off stump, was trying to lap it round the corner. Dot to finish. 13 gone. It's 120 for 1. 120 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। केसीसी पुलवामा टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला किया गया था, और 168 रन बनाए शाइनिंग स्टार पांपोर ने, और 169 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 120 टीम का स्कोर। नया ओवर शुरू होने को हैं। गेंदबाज जो गेंदबाजी करने की तैयारी में हैं, और एजाज को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। इमरान जरगर स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो बल्लेबाज हैं आदिल ने अब तक 34 रन बनाए। नए ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से दूर, वाइड का इशारा आ रहा है। इमरान जरगर टीम के खाते में 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में ये 1 रन आएगा। 120 से बढ़कर अब 121 टीम का स्कोर। केवल 48 रन चाहिए जीतने के लिए, जबकि 42 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। एजाज स्कोर की दूसरी गेंद, पहली गेंद करने के लिए तैयार। पहली गेंद तो वाइड हुई थी। फुल टास पे ही लेके गेंद को धकेला। गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात नजीर टाइगर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा। मीर रमीज गौहर मैच का आनंद ले रहे हैं। शाइनिंग स्टार पांपोर से वो बने हुए हैं। गौहर भाई मैच का आनंद ले रहे हैं। 1 विकेट चाहिए मैच में वापसी करने के लिए, ये गौहर का कमेंट आया है।
मिड विकेट की दिशा से गेंद को बाहर निकाला, बाउंड्री लाइन से गेंद दूर उस ओर गई जहां कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। मोहम्मद आकिब मैच का आनंद ले रहे हैं। यहाँ आतिशबाजी हो रही है, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लिया गया, न सिर्फ ऑफ साइड में बल्कि ऑन साइड में भी। 126 एक झटका लगा, 13.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। 43 रन चाहिए जीतने के लिए, 40 गेंदें बची हुई हैं। टीम बैकफुट पर नजर आ रही है शाइनिंग स्टार पामपुर की। Absolutely, with utmost ease. The way they have liked, these two batsmen have gone for their business. They have scored runs at their will. 126 for 1, 13.2 overs gone. Akib is taking a heavy liking on Ajaz. He's gone for 16 so far. He's bowling his second over. He had a fielder at deep square leg. He had a fielder at long on. That ball was placed to perfection between these two fielders. Here is the next ball. That's a lovely shot. That is beautifully done. Imtiaz lefty does well. Limits the scoring to just a single, but that was a gorgeous stroke down the ground. That single takes the total to 127. Now they are 42 short of a well-deserved win in the finals of Koil Premier League. Next ball, that's cut away, nicely driven, beautifully done by the fielder there, equally well fielded. Good cricket on that occasion. It was short, it was wide, and it was driven up the back foot, getting on top of the bounce on that occasion. 128 now. The fourth ball coming up. Fuller in length, searching for the block hole. Inside, edged away. Fielder in pursuit. Wicket keeper as well. The fielder does well, pushes it inside the field of play. The batsman come back for a brace. 2 more takes the total to 131. Facing some difficulties with the scoreboard, but it will be corrected. Adil is batting on 39. Imran Zargar is batting on 56. Here is the next ball. Short takes the outer edge of the bat, goes up in the air, but eludes the fielder on its way to the cover boundary for 4. Hit on the up and hit beautifully for 4 more. Over comes to an end with a boundary. 135 for the loss of 1 wicket. They are cruising along, they are marching along. The team of KCC Pulwama. 43 not out is Akib, 56 not out is Imran Zargar. JK Sports Time providing you live coverage in collaboration with our sponsors Arco Fenestration, UPVC Windows and Doors, Fashion Fiesta, Anthem Sports India, Shining Star Pampore and Nasir Sports Smart Singhpura Patan. 135 for the loss of 1 wicket from 14 overs. Having a lush green outfield here at Koil Pulwama. We are in the final of Koil Premier League. Nazir Tiger is about to bowl his 4th in the last over of his spell. First ball, it's a drop down. It has been hit beautifully. That's gone for 4 more. That is a hit me delivery. And the batsman was up to it in a hurry. Imran Zargar moves to 60 now. 139 for the loss of 1 wicket. This is turning out to be an easy chase for KCC Pulwama. Rides the bounce brilliantly. Chance of a run out at the non-striker's end. But the throw was very wide and the bowler wasn't behind the stumps as he would have been. This one has been brushed down the ground. Once again finds the fielder at long on. Easy single. And these two out in the middle. They're doing it easily now. Arco Fenestration, UPVC Windows and Doors. The manufacturers of the PVC stuff. This is lofted in the air. 1 bounce into the boundary at long on. 4 more.
This is a walk in the park for these two batsmen out in the middle. They are doing it, and they are doing it in style. Imran is batting on 62. Aqib is batting on 45. Next ball, up in the air, easy catch. Wicketkeeper takes the catch. He's gone for 45, but is it too late for Shining Star Pampore? I think it is. 139 for the loss of 2 wickets now, and a brilliant innings of 45. Aqib is going back to the heart. Nazir Tiger picks up his 2nd wicket. But outstanding partnership between these two. You can understand the seriousness of the situation, and you can understand that Asif Rasool hasn't come out to bat so far. Such has been the dominance, sheer dominance on the part of these two batters, Imran Zargar and Aqib, but Aqib has been dismissed finally. 143 for the loss of 2 wickets, and this is the last ball of the 15th over coming up. Asif Maglu beg your pardon, it's Asif Manzoor who's taking guard from umpire. He's the new man in who has joined Imran Zargar. Asif Manzoor, he has represented state of Jammu and Kashmir. The first ball is a copybook forward defensive to end that over. 15 done. 1-4-3 for 2. 5 overs to go. 8 wickets in hand. 26 needed. This should be easy. But cricket, a game of glorious uncertainties. You can't predict anything. Well, it can just twist and it can turn. But let's wait and watch if it takes a U-turn from here on in. It's going to be Muzi Waqar to bowl a fresh over. On strike is Imran Zargar. First ball has been stroked away down towards deep mid wicket for a single. 1-4-4 for 2. Now they need 25 from 29. जिस तरह आते ही आसिफ मंजूर ने सामना किया नजीर टाइगर का, दर्शा रहा है कि किस कैलिबर के बल्लेबाज हैं वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुजफ्फर वकार के पास भी अनुभव की कमी नहीं है, और ये जो मुकाबला होने जा रहा है मुजफ्फर वकार और नए आए बल्लेबाज आसिफ मंजूर के माबैन, देखने लायक होगा। बल्ला हवा में झूलता हुआ बल्लेबाज आसिफ मंजूर का। इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर गए, शानदार स्ट्रोक, गेंद पॉइंट की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी पूछे जाहिद, उन्होंने गेंद को अंदर धकेलने की कोशिश तो जरूर की थी, पर उन्हें चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के स्कोर में 4 रनों का और इजाफा, 144 से बढ़कर अब 148 हो गया। केवल 21 रन चाहिए जीतने के लिए। 28 गेंदें बची हुई हैं। मुजफ्फर वकार इस ओवर में अगली बार सामने है बल्लेबाज आसिफ मंजूर। बढ़िया गेंद मिडल और लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद की लेंथ के पीछे आए, धकेला गेंद को कवर की ओर। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं है। आसिफ मंजूर सामना करेंगे गेंदबाज मुजफ्फर वकार का। मुजफ्फर वकार की गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले के बारी बाग से गेंद लगी, हवा में चली गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे प्रयास में भी गेंद को कैच करने की कोशिश की, पर परवेज से कैच छूटा। जीवनदान के सहारे आसिफ मंजूर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। हालांकि आसिफ मंजूर ही स्ट्राइक पे रहेंगे, रन के लिए वो नहीं दौड़े। फिर से कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे, लंबा डग बाहर भर दिया था, और वो जो हम कहते हैं रीच का इस्तेमाल किया गेंद तक पहुंचने के लिए। इस बार फिर से ऑफ साइड में स्ट्रोक लिया, लॉन्ग ऑफ की ओर इम्तियाज लेफ्टी मौजूद, और उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लिया। इस तरह से आखिरकार आसिफ मंजूर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं 148 के स्कोर पे। ये तीसरा झटका लगा। आसिफ मंजूर ज़्यादा समय तक वो क्रीज पे नहीं रहे, पर जो भी डिफेंसिव स्ट्रोक उन्होंने लिया, जब कभी प्रहार के लिए गए, देखने लायक ही। और इंसान तो चाहता था कि देखते रहूं, पर यहाँ मुजफ्फर वकार कुछ और इरादों के साथ गेंदबाजी करने के लिए आए थे, उन्हें अपना शिकार बनाया। मैदान छोड़कर आसिफ मंजूर वापस गए। तीसरा झटका लगा डगआउट से। नए बल्लेबाज अब नमूदार हुए। आसिफ रसूल मैदान की ओर आ रहे हैं 148, 2 विकेटों के नुकसान पर। 148 for 3, 21 from 24.
2 wickets in double quick time for Shining Star Pampore. Is there a twist in the tail? I wonder, because the next batsman in, there is no respite for the bowlers of Shining Star Pampore. He is Asif Rasool, the skipper of KCC Pulwama. He'll be at the non-strikers end. Imran Zargar will be on strike. He's batting on 63. Imtiaz lefty has been brought on. It's in the gap. Will the batsmen push harder for a second? No, they don't. Only a single takes the total to 149. I wonder why has been Imtiaz lefty introduced quite late in this bowling attack. This is the second spell. He bowled a couple of overs in the first spell. This is brilliantly done as he was searching for the block hole. Flicks round the corner down towards cow corner for a single, opens his account, and he takes the total to 150. 150 comes up for KCC Pulwama. Driven down the ground for one more. We are having a lot of viewers, and we have a viewer here, Imtiaz Farooq. It's known as Gasha. He's watching us from Koigam Tangmarg, along with Farooq Sir from police station Patan. 151. Once again turns it in front of square. Will he push harder for a second? No, they decide against it. Just a single. That single takes the total to 152. They are quite happy to nudge the ball around and do it in singles. 17 needed from 20 now. KCC Pulwama, they are milking the bowlers around now. They know that they are on the verge of a huge win here in the final against Shining Star Pampore. Up the back foot, forced away on the offside, fumbles, the ball goes into the boundary for 4 at point. That sums the story up for Shining Star Pampore. Another mishap in the field. This was just stroked away up the back foot by Imran Zargar, but the fielder spoils it. 156. Imran Zargar has played brilliantly today. One more run. Will he push harder for a second? Asif Rasool is not interested at all. A single to end that over. 17 done. 157 for the loss of 3. They need 12 from 18 balls. Imran Zargar is doing it in style. He's batting on 70 from 50. Asif Rasool is batting on 2 from 2. 12 रन चाहिए जीतने के लिए, जबकि 3 ओवरों का खेल बचा हुआ है और 2 सेट बल्लेबाज जिन्होंने यहाँ एक बड़ी पारी खेली। इमरान जरगर अभी भी नाबाद, हालांकि नए आए बल्लेबाज हैं आसिफ रसूल। आसिफ रसूल ने अब तक 2 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाकर वो नाबाद हैं। मुजफ्फर वकार नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। इमरान जरगर को ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, मिड विकेट क्षेत्र, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। स्टंप्स की लाइन में ये शॉर्ट गेंद थी, पलटकर उस दिशा में स्ट्रोक लिया गया। मिड विकेट क्षेत्र, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का इजाफा। टीम का स्कोर 161, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद फिर से स्ट्रोक लिया, ऑन साइड में स्क्वायर लेग की ओर गई। इमरान जरगर के खाते में 1 रन और इमरान जरगर अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नजर आ रहे हैं। 161 से बढ़कर 162 टीम का स्कोर। जीतने के लिए अब 7 रन चाहिए, 16 गेंदें बची हुई हैं। इमरान जरगर 75 रन बनाकर नाबाद हैं। बैकफुट पर गए, कवर की ओर गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी इम्तियाज लेफ्टी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, आर्को फेनेस्ट्रेशंस, जबकि सहयोग मिल रहा है शाइनिंग स्टार पांपोर, फैशन फीस्टा, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा का, आर्को फेनेस्ट्रेशंस, यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स, जिनके सहयोग से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। आसिफ रसूल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, इमरान जरगर सामना करने के लिए तैयार। 6 रन चाहिए जीतने के लिए। कदमों का इस्तेमाल, गेंद को पहुंचाया मिड विकेट, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ मैच को अपने नाम किया। केसीसी पुलवामा ने एक बड़ी जीत हासिल की। 7 विकेटों से उन्होंने इस
बड़े इवेंट कोयल प्रीमियर लीग को अपने नाम किया और शाइनिंग स्टार पांपोर टॉस जीतकर जो उन्होंने फैसला किया था बैटिंग करने का, वो फैसला सही साबित नहीं हुआ। इनिंग की शुरुआत में ही गौहर खांडे की उन्होंने विकेट गंवाई और उसके बाद एक के बाद एक झटका लगा। रन औसत कोई ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आई अंत तक और टीम केवल 168 बना सकी। 169 रन चाहिए थे जीतने के लिए। उस लक्ष्य को यहाँ चेज किया केसीसी पुलवामा ने बड़ी आसानी के साथ। आप देख सकते हो डगआउट की ओर वापस जा रहे हैं आसिफ रसूल और इमरान जरगर। इमरान जरगर ने कुल मिलाकर शायद 81 रन की पारी खेली है और मैन ऑफ द मैच के वो तगड़े दावेदार होंगे। दूर उस ओर डगआउट की ओर वापस जा रहे हैं। कोयल प्रीमियर लीग का आज फाइनल हुआ था। इस फाइनल मुकाबले में केसीसी पुलवामा ने 7 विकेटों से बड़ी जीत हासिल की शाइनिंग स्टार पांपोर के खिलाफ। हम आपसे अब विदा चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। किसी और मैदान से फिर आपके साथ रूबरू होंगे। जाते जाते इरशाद भाई की जुबान से कुछ शब्द ज़रूर सुनना चाहेंगे। To summarize it up and to wrap it up, it is KCC Pulwama, the champions of this edition of Koil Premier League here at Koil Pulwama, winning by 7 wickets. Courtesy a brilliant performance by Imran Zargar, score 81 not out, and Samar was instrumental. First up, scored a quick fire 25, and then ably spotted by Akib, scored a brilliant 45, and Asif Rasool just knocked a couple of runs from his bat. So the news from here is that KCC Pulwama, winning by 7 wickets, are the champions of this edition of Koil Premier League Pulwama. We were providing you live coverage for the match, for the finals, in collaboration with Anthem Sports India, Arco Fenestration, UPVC Windows and Doors, Shining Star Pampore, Nasir Sports Smart and Fashion Festa. We'll be back with the matches to come, some blockbusters to come your way. Till then, enjoy your time. Thank you for joining JK Sports Time. Allah Hafiz.